Today we will learn about face astrology. ठीक है, तो हम ये जानेंगे किस तरह चेहरा देख के just by seeing face you can predict everything and you can understand the planetary combinations of that person's chart without seeing the chart, only seeing the face you would be able to tell. ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था ना मनीत, राइट? याद है? वी वर टेकिंग एग्जांपल वेयर आई टोल्ड यू ना यू वर सिटिंग लाइक दिस, करेक्ट? Yes. Your video was not on nothing, so you were sitting like this. So why? So if you see in your chart, you have a combination of Mercury and Venus. So in your chart, you have a combination of Mercury and Venus. Venus means cheeks on the face. Venus means cheeks. And But your in the hand, chart, huh? in the chart combination was Mercury with Saturn. No, Mercury, Venus will be also there. Check. See the trine. No, it was, See your trine. Mercury is in first house हाँ, and Venus is in second house. So करेक्ट. in it देखो क्या doesn't. होता है, when we connect a planet, for example, we want to connect a planet, we have to connect a planet with these three combination. First is 212 combination, second is 159 combination, and third is the combination where the planet is actually sitting. जैसे कि मर्क्यूरी किसी के साथ बैठा है तो उसको हमको लेना है. नेक्स्ट ये होता है कि हमको डिग्री वाइज वी हैव टू अरेंज प्लैनेट्स इन डिग्री वाइज. ठीक है, सो now, if you want to connect Mercury, you have to connect all the planets which is present in first, fifth, and ninth from Mercury. First, fifth, and ninth from Mercury, that is one. Second, 212. 212. If Mercury is sitting in first house, उसके आगे वाले house में कौन से planet हैं? That planet also you have to take. For example, Venus. So Mercury is actually connected to Venus. And also you have to look a planet which is behind Mercury. Okay, but the effect of that planet who is behind, I mean पीछे वाले house में, back side, back house, 12th house. First your Mercury is in first house, 12th house. So 12th house में कोई planet है कि नहीं उसको पकड़ना है, but the effect of the 12th house planet will be comparatively less. Okay, because Mercury has passed 12th house and going to second house. That means his future course of action, Mercury's future course of action is second house, correct? If you were not born that time, what would have Mercury done? Mercury would simply go forward and go to the second house, correct? तो उसका future course of action क्या है वो हमको देखना है. So Mercury first house में है तो उसके आगे जो planet है 212 combination में जो भी planets है उसको लेना है, उसके trine में जो है वो लेना है, और उसके सामने seventh में जो planet है उसको भी लेना है. ठीक है, देन उन प्लैनेट्स को अरेंज करना है. ठीक है, अच्छा, मरकुरी का कारक तत्व क्या लिखा था? व्हाट आई मेड यू रोट अबाउट मरकुरी, व्हाट आर द कारक तत्व ऑफ सिग्निफिकेटर्स ऑफ मरकुरी? Intelligence, education. अभी नाउ if someone comes to you and tells you that I want to understand in what field I must do education on, so what you will do? I will check Mercury. Correct. So how will you check? You have to connect all the planets who are sitting with Mercury. So 212, let us see a chart. You check, you send a chart, let me save and check. I will tell you, or we can take some other example. Let me stop share and let me check if I have a chart with me. आपका ही चार्ट लेता हूं मैं. हाँ क्या? So let me share my screen again.
ठीक है. Now see, this is your horoscope, correct? ठीक है. Yes. So see, where is Mercury? Mercury is in first house. First one. ठीक है. Now we have to understand this person's education. What we have to look? We have to connect these planets and one in the trine. So see, first we'll take 159. 159. कोई planet है इसमें? Any planet is there? First from Mercury. First from Mercury we have planet Saturn. Mercury से जो फर्स्ट हाउस में है वो सैटर्न है क्योंकि उसके साथ ही बैठा हुआ है. इट इज सिटिंग विद हिम with Saturn only. Then count 5 from Mercury, 5 places. 1, 2, 3, 4, 5. So here we don't have any planet. Then No. count 9 from Mercury. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here also we don't have any planet. So for practice purpose, I'm counting and telling you, otherwise you can go fast. Okay. But just a minute. Okay. So 159, ठीक है. Mercury Saturn we have connect. The first criteria is fulfilled. Okay. पहले 159 लिखना. Right. I mean with 159 bracket strong connection. Okay. इसका result will be strong of this connection. जो भी planets 159, whatever planets you have 159 with that respect to that planet, it will be very strong influence. ठीक है. So Mercury लिख लो. Mercury के साथ Saturn लिख लो. Mercury Saturn bracket में you will write 1, 5, 9. You got this Mercury Saturn connection with 1, 5, 9 process and you write results will be strong. ठीक है. Next, 212. 212 means 1, 2. Second house from Mercury. Second house of Mercury, what we have? Venus and Rahu. So you write down Venus and Rahu. Okay. This is again strong connection. Okay. Okay. Then 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have what? Jupiter. So write Jupiter. First, write in a haphazard way, normal way. Okay. So what connection we got? Mercury. So we want to know about education. Okay. So we are seeing all this in respect to Mercury only because Mercury is education. Correct? If someone used to come to me and tell me about his mind that he is depressed. Okay. So what I will look at that time, what connect I will make? Mercury. Mind. Mercury only. Man. Moon. Moon. तो हम तब मून को पकड़ेंगे. We will see moon. Who is Jiva Karka? To understand the characteristics of that person, which planet we will be seeing? Jupiter. Then we will see 159, 212, 17 with respect to Jupiter. Got it? Got it? Understood? समझ आया? आपकी आवाज चली गई थी बीच में. हाँ. Just a minute. ठीक है. समझ आया? अंडरस्टूड ना क्या मैंने बताया अभी? तो जिस प्लैनेट का कारक तत्व, देखो कारक तत्व कितना इंपॉर्टेंस, यू कैन सी हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द कारक तत्व. इफ दैट पर्सन आस्किंग अबाउट जॉब. आपने जीवा कारक का पूछा, उसके बाद कुछ बोला था? हाँ, I said if Jiva Karka, you have to look the characteristics of a person we see from Jupiter. So with respect to Jupiter,
जुपिटर को पकड़ते हुए उसका 159 212 17 क्या है, हमको वो कनेक्ट करना है। ठीक है। So here Mercury is what? Mercury is education. So if a child comes, for example, this is a child's chart. If child comes to you, if his father comes to you and asks you, मेरा बेटा कौन से फील्ड में जाएगा, ओके, कौन सा फील्ड उसके लिए राइट, अच्छा होगा, तो मैं मर्क्यूरी देखूंगा। ठीक है, आई विल सी ठीक मर्क्यूरी। है। सो व्हाट आई विल कनेक्ट विथ मर्क्यूरी? I will connect Saturn with Mercury because in 159 combination I got Saturn. In fifth house and ninth house with respect to Mercury, in fifth house and ninth house in respect to Mercury there is no one. Correct? Right. So we go to the next criteria, which is 212. In 212 we see Venus and Rahu. You write down Venus and Rahu. Second 17. Yes. Third is 17. In 17 we find Jupiter. 17 meaning seventh from Mercury. Opposite to each other. Seventh from Mercury. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opposite. Always seventh is opposite. Now we'll see another 212. I have told you 2 we have seen, 12th we have to see. 12th is backside. So this is the 12th house. वैसे भी in respect to first house it's 12. But in respect to any house, the back house, the पीछे वाला जो घर होता है, that is always 12th house. With respect to that house. Sun and Mars. So write down Sun and Mars also. Written Sun and Mars? Yeah. Okay. Now you see, Mercury से डिग्री के पास कौन है? मर्क्यूरी, अभी ये देखना है ना, डिग्री वाइज सेट ऑल दिस प्लैनेट्स, सेट ऑल दिस प्लैनेट्स डिग्री वाइज। Yeah. 25 degree है Mercury. 25 degree 59. No, no, don't tell me, you just arrange all the planets. Now tell me मर्क्यूरी के पीछे आगे कौन है? विनस है ना? Venus है, yes. करेक्ट। सो राहु भी है, राहु. दैट इज सेपरेट। सी वी हैव टू सी हु इज क्लोजर टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद या उसके पहले उसकी विनस है, वो तो राहु थोड़ा दूर में होगा। दैट इज सेपरेट। पर मर्क्यूरी के पास कौन है, हमको वो देखना है। विनस है। ठीक है। सो वेरी नियर डिग्री वाइज व्हेन यू सेट दोस प्लैनेट्स, यू सी मर्क्यूरी इज क्लोज विथ वीनस। ठीक है। सो व्हाट इज मर्क्यूरी? मर्क्यूरी इज हैंड्स। ठीक है, मर्क्यूरी इज हैंड, वीनस इज चीक्स। सो मर्क्यूरी वीनस इज एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट. डिग्री वाइज चेक करना है. जैसे 25 है, आसपास तो मेरे सन पढ़ रहा है 28. वीनस इज 17. वीनस इज 17. हाँ, पर सन क्या है? व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द प्लैनेट्स हु आर बिहाइंड इन 12th हाउस उनका इफेक्ट कम होता है। ओके. That's why I told you, प्लस you go for another app which I have showed you. No? Don't go with this app. I've already told you one app to install. Go with that app. नो, That will दैट give you ऐप इज better नॉट deal. ऑन आईफोन. You will get okay. अरे एंड्रॉइड में ले लो आप उसको। एंड्रॉइड तो ले, आईफोन एंड्रॉइड में ले लो, वो ऐप बढ़िया है, इसमें कुछ काम नहीं होगा। तो मुद्दे की ओके. बात ये है, द मेन थिंग इज मर्क्यूरी इज नियर टू वीनस। ठीक है। आप डिग्री वाइज अरेंज करो, समझ आ जाएगा। सन एंड मार्स को आप अभी इक्वेशन के से निकाल दीजिए। डोंट पुट इट इन दैट। सो व्हेन यू चेक यू विल सी मर्क्यूरी एंड वीनस इज टुगेदर। आसपास ही है, दोनों एक दूसरे के पास है, या तो इधर मर्क्यूरी इधर वीनस, वीनस मर्क्यूरी, ऐसे रहेगा डिग्री वाइज। ठीक है. ठीक है। सो मर्क्यूरी वीनस इज टुगेदर, मर्क्यूरी इज योर हैंड्स एंड वीनस इज योर चीक्स. So as Mercury Venus is very close to each other, you will always have this habit. Okay. राइट. Got it? What is the logic? So we have Yes. understood this part. Now similarly हर एक planet का आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है। When you connect your planets degree wise, you will be able to know. Now see,
what is, so now we will check. I mean, I have made you write these things. Again, you write these things. Let's go a little bit here. Okay. Okay. So sun is right eye. Correct? Sun is right eye. ठीक है. अगर मार्स इज क्या, मार्स क्या है, मार्स, मार्स का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द मार्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स? Any idea? Like, for example, let me tell you one thing. Just an example. If someone has a problem in right eye, what you can identify from that? Problem with sun. Correct. So without any seeing the chart, you can directly give remedy for sun. Got it? Right. मतलब कोई आएगा, अगर देखोगे अरे इसका लेफ्ट आई में प्रॉब्लम, इचिंग लेफ्ट आई में ही है, तो क्लियर है भैया इसका लेफ्ट मून खराब है या मून में कोई प्रॉब्लम आ रही है. अभी इन्फेक्शन मर्क्यूरी का भी कारक होता है, इन्फेक्शन सम सॉर्ट ऑफ, या केतु भी आ जाता है उसमें, तो यू कैन गिव रेमेडीज रिलेटेड टू दैट. ठीक है. सो लाइक दैट. So whichever body, whichever face part you are seeing is affected, you can easily identify which planet is getting affected. Okay. So sun is right eye, moon is left eye, Mars is eyebrows. Okay. Mars is eyebrows, this part. Eyebrows, sorry, and a nose bridge. This one is the nose bridge. You remember I have told Mohan that he has habit to touch his eyebrows like this. Eyebrows, Why? Because Mercury and Mars is connected. Mercury's hand. So when he will set this in degree wise, he will see Mercury, Mars is connected. Eyebrows, teeth पे, nose bridge पे ऐसे ऐसे करने का, ये इनका आदत रहेगा. He will have this habit. राहु कनेक्टेड तो यस में ऐसे करने का हर वक्त आदत रहेगा. With means you can easily understand, like by only seeing the behavior, if a person is doing like, you will understand the Mercury Rahu hai, this person is, you know, little bit diplomatic, काफी intelligence रहेगा. Right. So just with their behavior and where they are touching their body, I mean touching their face, wherever they are touching, you will be understanding those combinations. अभी और थोड़ा डिटेल में इसमें जाते हैं. So write down these things. Sun is right eye, Moon is left eye, Mars is eyebrows, teeth, and nose bridge. Okay. Mercury is forehead and hands. Okay. Forehead. This forehead, as we say ना, बुद्धि. तो बुद्धि इधर है हमारी, तो ये forehead ऐसे याद रखना. ठीक है. Nose is Jupiter. Why Jupiter is nose? Jupiter is prana. ठीक है. हवा जो होती है ना, जीव में हवा, जीवाकारक. So he is the prana and he is the karak of nose. क्योंकि उसी के थ्रू हम अपना ब्रीथिंग करते हैं. प्राण इज देयर बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. वीनस इज चीक्स, सैटर्न इज थिन, सॉरी चिन. ठीक है. व्हाई आई गिव रेमेडी फॉर तिरुपति बालाजी? if you know the story of Tirupati Balaji, he was hit by some vajra, or I don't remember exactly, vajra on his chin. ठोडी में लगा था उनके. Chin is Saturn, so he is connected to Saturn. इसलिए उनका सैटरडे बहुत स्पेशल पूजा होता है. ठीक है. केतु इज हेयर. केतु इज हेयर. देन राहु इज ओपनिंग ऑफ माउथ, नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर्स. ठीक है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दैट these planets are connected. So I have also made you write these things like brilliance and charm. If you see some part of the face has good brilliance and good charm, you can connect. For example, let us check one thing. If you see someone's hair is soft, oily, shining, correct? If you see these characters in someone's hair, what you can connect? Moon is connected with Ketu. Okay, like that. Okay. So sun is what? Brilliance and charm. Moon is softness. Moon is softness, oiliness. So
Venus and Moon. How will you see? If you see oiliness on the more, see oiliness can be on the entire face, but a particular area will be there where they will be having, I mean, more oiliness. For example, nose. बहुत जन का देखा नाक में बहुत oiliness होता है इधर. Only this part, nose bridge. So you can easily say that is Mars and Moon combination. पसीना हो रहा है पर oiliness इधर ही होगा इस एरिया में. ठीक है. So moon is softness. मेरे भी नोज के, बट मेरे भी ना नोज मतलब नोज ब्रिज पे नहीं, नोज के साइड्स पे ऑयली होता है. तो मेरा मून और जुपिटर कनेक्टेड है. इधर इधर साइड्स पे. हाँ हाँ हाँ. हाँ, मून और जुपिटर कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट इफेक्ट देगा. ठीक है. ओके. इसको हम डिटेल में वी विल गो फॉर अनदर क्लास, विल सी इन लिटिल बिट डिटेल. ठीक है. बट राइट नाउ आई एम गिविंग सम things where you can easily understand. So you have to look, I mean, the charts basically. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एग्जांपल. इफ यू वांट टू नो अबाउट अ पर्सन्स हेयर, ठीक है, केतु कनेक्ट करना मतलब देखना किसी का चार्ट लेना, होल्ड समवंस चार्ट whom you know, then कनेक्ट केतु. जैसे मैंने बताया हाउ टू कनेक्ट 159. ठीक है. नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, इन केस ऑफ केतु एंड राहु, ठीक है, उसके ऑपोजिट में कोई अगर प्लैनेट है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, योर चार्ट ओनली. सी यू हैव मून केतु, correct? Right. So if I want to make a string of moon specifically moon, so I won't take Venus. Okay. हम Venus नहीं लेंगे, क्योंकि बात यह है बेसिकली, आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि केतु का कंजंक्शन मून के साथ है. लाइक एग्जांपल ये भी है कि केतु का कंजंक्शन लेंगे, केतु का अगर स्ट्रिंग बनाएंगे, उसका ऑपोजिट प्लैनेट जो भी कंजंक्ट होगा वो उनके साथ होता है. It is not because Moon, Venus, and Ketu and Rahu are such a strong node that they pull one planet. If they have conjunction, वो अपने पास वो planet रख लेते हैं, वो उसका एनर्जी नहीं देते हैं, वो उसकी एनर्जी वही लेता है. कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. ओके. ठीक है. जब हम केतु का कनेक्शन बनाएंगे हम मून को लेंगे, वीनस को नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इट्स विथ राहु. ठीक है. ओके. ठीक है. उसको हम और थोड़ा डिटेल में अगले क्लास में देखेंगे, कनेक्शन कैसे बनाते हैं उसको और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा. सो नेक्स्ट इज मार्स इज व्हाट, प्रोमिनेंट. ओके. मार्स इज प्रोमिनेंट, प्रोजेक्शन, शार्प एंड स्कार्प्स. सो वेरेवर यू सी प्रोमिनेंसी, जैसे शार्प नोज अगर आपने देखा, तो आप बोल सकते हो जुपिटर मार्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. ठीक है. या मार्स अपने राशि में हो, या मे बी यू कैन से दैट मार्स is in his own Rashi, or Mars is in a Rashi where it's very friendly. That is the reason that person is having prominent nose. ठीक है. So projection, sharp things. It's very sharp. जो जैसे आंखें देखना बहुत जनों की, you will see a lot of people having sharp eyes. So you can understand that why they have. So you have to see the connect. ठीक है. Then you have Mercury. Mercury is what, tender, smooth, attracting element. ठीक है. 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होगा. So tender, smooth, attracting element. Jupiter is plump fat. If you see someone's cheeks, they have good, bulky cheeks. So you can understand that they have connect with Venus and Jupiter connection है. ठीक है. So I have lot of फ्रेंड्स, आई मीन उनके गाल इतने मोटे हैं तो समझ आ रहा है कि जुपिटर वीनस, उनके चार्ट में जुपिटर वीनस का ही कनेक्शन होता है. So we get that Jupiter Venus. So if you see, we'll find it. And kabhi kabhi what is happens, sometimes it triggers because of the transit, it triggers. Then Mercury is tender, smooth, attracting element. This you have written already. Now when you come to Venus, so what will be the attracting element? Venus will have
rich appearing factor. Basically, one part of the face will be such that it will be very attractive. Okay. Rich appearing factor. Saturn. Dull. That area will be dull. Darkened, you can say. Darkened marks. Making a weak look. We can also create artificial combinations to face also. कभी कभी हम कुछ ऐसे करते हैं, sometimes we do some things like this that artificial combination is made. How? When we don't sleep, we are like awake till night time and you have dark circles. You automatically make a connection of Saturn and Sun and Moon. Saturn is what? Work. So it will hamper your work. Of course, okay, you won't sleep, then this thing only happened, right? So you can make this connection, like artificial also it makes, the connection is made. Okay. Rahu. Big, open, opened up. I am just sharing this this very small piece of knowledge, but it has vast, these things are very unique. This place, black patches. Okay. If you see these sort of things on a connected to any organ on their face, connected to any, feature of the face, you will be seeing these things. Just say, for example, if someone has open pore on their cheeks, lot of open pore, then easily connect that this person has Venus Rahu combination. Correct? Or एक देखना, another combination in Ketu. Ketu, what is Ketu? Ketu is narrowing down. Correct? बहुत जन के गाल बहुत ये ऐसे रहते हैं, एकदम चपटे रहते हैं, तो वो वीनस केतु आ जाता है, बिकॉज केतु इज व्हाट, इट श्रिंक्स. ठीक है, तो श्रिंक्स इज द फर्स्ट थिंग. श्रिंक और यू कैन से स्मॉल, ऑब्स्ट्रक्शन इज केतु ना, ऑब्स्ट्रक्टिंग. और you can write red marks, ugly growth, you can write ugly growth sort of, and red marks. ठीक है. एक वो प्रॉब्लम होती है ना फुलेरी वाली, जो व्हाइट एंड ब्राउन होते हैं फेस. No, that is a separate part. That is another. Look, oh, दूसरा, that is different disease. ठीक है. Okay. So if you see someone's cheeks are very narrowed down, you can easily say that is a combination of Ketu Venus. Venus Ketu. ठीक है. So you understood ना कैसे देखना. You have to do a lot of practice. I can give you more, but it is given only like जितना आपको भी ना जरूरत है वैसे मैंने आपको बताया, पर पूरा बताया है आपको. You have to just apply first. You will start applying, you will understand how to apply. ठीक है. Link. You have to make a link. And with this link, you will be able to predict a lot of things just without seeing anything. किसी का देखना nostrils बहुत बड़े होते हैं,
What is nostrils? Nostrils are Rahu. राहु. And Rahu opened up. बड़े मतलब क्या? राहु काफी कनेक्टेड है. या जुपिटर राहु है, जैसे नोज बड़े हैं. Nose is big, large. It appears large. Okay, then you can say it is a connection of Jupiter and. जिनके नोस्ट्रिल्स बड़े हैं वो तो दोनों ही राहु राहु हो गया, नोस्ट्रिल्स भी और You ओपन can अप say भी. Rahu effect is much more. Rahu effect is very high. Or Rahu is sitting in a place where it is actually making his presence, good presence. Okay. So इस तरह से हम इसको देखते हैं. So you keep on, you practice these things and you'll understand. Any doubts you have from the previous class? So we have completed Karak Tatwa of Venus, इसमें everything. तो जैसे ये हमने प्रिडिक्ट करा ना, ये फेज का, वो जो एजुकेशन वाली चीज थी वो Yeah, क्वेश्चन बीच में ही रह गया. I have asked, so I have given an example, education. Okay. So likewise, taking the Karak Tattva, you can understand. I will tell you more about it. How to, like, when we connect, for example, if there is a connection of Mercury and Saturn also, that you can say that that person will study that thing which is related to study and also do the job in that particular field only. That will be doing career astrology. So I will be teaching you that Mercury is related to which career, Sun is related. Sun is what? Government. If you have Sun and Saturn, degree wise Sun आगे है, Sun पीछे Saturn आगे है, या Saturn के आगे Sun है, for example Saturn के आगे Sun है, degree wise, you can say this person can pursue or will pursue government job, or he will be in a very good post. He will be have a good status in his career. Correct. So we will look it through career astrology. ओके. ठीक है. जैसे मून का करियर कैसे हो सकता है? मून बेसिकली इज गुड फॉर, लाइक वी हैव टू सी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन है कि नहीं. दैट पर्सन विल हैव ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब. ट्रैवल करेगा वो, या तो उसको कमीशन बेस्ड जॉब, और इन सेल्स और फाइनेंस, मतलब टैक्सेशन फाइनेंस, ये भी मून में ही आता है. ठीक है. कैश से रिलेटेड जो भी लिक्विड कैश होती है, whatever liquid cash is there, with related to that they will be doing a job. Okay, so that we have to check, right? So then I will be, after this we complete this, we'll go to the prediction part. When we complete the rashis are left. So when we do the rashis, we'll do the prediction part, and simultaneously I will be doing the medical astrology part and also the career astrology. This is very important. Okay. So today we'll do it till here only. You enjoy your Diwali, and next class we'll start doing Rashi. Okay. ओके. Okay then. ओके.